أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I am Pir Abdul Gani, teacher, co-lead higher secondary school, Sanjipura. Today, my subject is English grammar meant for classes 11th and 12th. And my topic is tenses. My dear students, you must know that tenses are the basis for English language. So I have chosen this topic today. We will, in this lecture, I will try to make you understand what this tense is and how this these tenses are used in English. So let's go. Tense. Before we study tense, we must have a clear understanding of verb because tense is something concerning a verb and its forms. हमारे स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंस समझने के लिए हमें पूरा ये वर्ब के मुताबिक पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वर्ब के बगैर कोई टेंस नहीं एंड इस पे हम वर्ब पर ही मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं और टेंस बनाया जाता है अब हम ये आपको पता ही होगा एज वी नो व्हाट ए वर्ब इज Verb is a word which says something about a noun or pronoun, which you already know. It may show some action. तो verb का अक्सर ज़्यादा main जो काम है वो action दिखाना. But you must know that verb does not show action always. क्योंकि verb जो है मिसाल के तौर पर पिछले मेरी क्लास में मैंने आपको दिखाया है कि verb auxiliary verb और main verb ये दो verbs हैं main verb तो कोई action नहीं है main verb does not show any particular action but this auxiliary verb does not show any particular action but main verbs show main verbs do this perform this task they show an action so दरअसल हमें एक्शन वर्ब्स को ही लेना है जिस पर हम टेंस बनाएंगे मोस्टली नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ब्स को समझने के लिए फॉर एग्जांपल गो मेक टेक कैच ईट ड्रिंक राइट सी रीड dig beat teach study etc. So many verbs are countless. It is not possible for me to write all the verbs of English or all the verbs of any language here on the screen or in a copy. So these are some of the examples. The go, jana, banana, khana, pina या लेना, पकड़ना, खाना, drink पीना, write लिखना, देखना, पढ़ना, खोदना, मारना, पढ़ाना, मुताला करना, समझना वगैरह वगैरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ब के अब देखो all the above verbs show a particular action इनका they show a particular action ये कोई काम दिखाते हैं यानी जो ये जाना गसन आना खाना पीना वगैरह ये किसी काम को जाहिर करते हैं तो ये आपको ऑलरेडी मालूम ही होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह A verb has four forms as you should know. Now I have made a table here. In this table, I will explain the point that a verb has four forms, which you already know because I expect you to know these things already. First form is called present tense form, or simply we call it first form. Past tense form we call it simply second form. Past participle form or what we call third form. Present participle form और जिसको हम कहते हैं सिंपली फोर्थ फॉर्म या इसको ing या ing फॉर्म भी कहते हैं Now, my dear students, these are the four forms. Go या goes दोनों present forms हैं इसका second form है went
gone, third form, and going, fourth form. And these this point you already know, but maybe this point you don't know. What is the difference between go and goes? Go is the plural verb. Goes is the singular verb. You must know it. That es or here. I have added s only to this make. Make makes. Go goes. Take takes. Run runs. Drink drinks. Catch catches. Eat eats. All these action verbs, all the main verbs, what they are called also main verbs, these main verbs are having four forms, but this first form, this has two forms. This first present tense form has two subforms. And this S वाला verb और S के बगैर verb या ES वाला verb या ES के बगैर verb. ES और ये this must be understood that this ES or S verb is always a singular verb. When we add s to a verb, it becomes singular. And when we add s to a noun, that will become plural. And this is the difference between the pluralization of a noun and a verb. Now, my dear students, go अब बनेगा ये तो plural है इसलिए करेक्ट वर्ड इसके लिए है go is plural verb goes is called third person singular verb. इसको हम third पर singular simple ये नहीं बल्कि third person singular verb इस्तेमाल कहते हैं because it is always used with third person singular pronouns or nouns or third person singular subject in a sentence. Now go goes went second form gone going make made made making take took taken taking. This take को बेस वर्ब भी कहते हैं make take drink catch. तो drink drinks ये जो है ये plural और singular verbs है s with s singular without s plural. In the same way catch caught catching eat ate eaten eating. These are some of the examples whose forms I have given. These are some of the examples of verbs whose forms I have given here only for understanding. Our main topic is tenses. Now we are able to go to the tenses directly. My dear students, there are three main tenses in English which you already know. The present tense, first one is present tense, second one is past tense, and third one is the future tense. Present tense, past tense, and future tenses. Future tense. तो यहाँ ये तीन tenses हैं. Most of the students will be knowing it already. Each tense has four forms. Dear students, you must know that when there are three main tenses, the present tense, the past tense, the future tense, each tense has form of यानी इन तीनों के अलग अलग चार फॉर्म्स भी निकलते हैं और चार एस्पेक्ट्स भी इनको हम कहते हैं फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स और एसपीसीटीएस एस्पेक्ट्स भी कहते हैं. अब ये चार फॉर्म्स कौन है? नंबर वन सिंपल और इंडेफिनिट. पहले फॉर्म को हम पहले को कहते हैं हम सिंपल या इंडेफिनिट फॉर्म भी कहते हैं. कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव. It is called a continuous form or progressive form. Perfect. Third one is perfect. Third aspect of tenses is perfect tense. And fourth is perfect continuous or it is also called perfect progressive tense. Now what do we understand by these terms, by this simple or indefinite? What is meant by this? We need to understand this first. सिंपल और इंडेफिनिट जो है ये उस टेंस को हम कहते हैं जिसमें हम किसी टाइम कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं यानी कब काम शुरू हुआ या कब काम खत्म होगा जिसमें ये डेफिनेट न हो यानी ये टाइम न दिया गया हो कि कब ये काम शुरू होगा और कब काम खत्म होगा. सिंपली वैसे कोई एक्शन हो रही है
ये कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये हम इसमें नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। तो दूसरा है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। एज द वर्ड कंटिन्यूअस itself suggests there's the continuity of an action is there in this tense. So when a continuous tense is used, it means कि इसमें जो काम है उसमें तसलसल है, वो जारी है, वो जारी है। ये कब हुई काम शुरू या कब खत्म होगी, इस ये किसी वक्त होगा भी, दिखाया गया होगा या नहीं होगा, लेकिन एक्शन कंटिन्यू होगी, एक्शन का में तसलसल होगा। Another third point is perfect tense. Perfect tense is that tense where we can where we can where we show an action which is completed, which is complete, यानी वो काम जो कंप्लीट हुई हो, जिसमें परफेक्शन हो, यानी खात्मा हो, काम का खात्मा हुआ हो। और जो फोर्थ जो है, फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द टेंस, वो है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसको हम कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आल्सो। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस? इसमें काम का खात्मा नहीं, बल्कि काम का तसलसल, काम का तसलसल। हमने ऊपर भी किया इस्तेमाल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ इसमें भी तसलसल होगा, इसमें भी, लेकिन इसको कहते हैं हम परफेक्ट टेंस इसलिए क्योंकि इसमें काम कब शुरू हुई यह दिखाया जाता है, यानी किस वक्त काम शुरू हुई ये दिखाया जाता है, और लेकिन काम जारी वो सारी है। जब हम करेंगे इनको इस्तेमाल, इस्तेमाल करने के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये टेंस होता क्या है। नाउ अप्लाइंग ईच टेंस, तो अब जो हमने सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमने लिखे, जो एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई ऑल दीज फोर फॉर्म्स टू ईच ऑफ द थ्री मेन टेंसेस। If we apply these four tenses to present tense, past tense, and future tenses, so total tenses we will be having 12 in all. So 12 tenses will be having are there, which we have to study one by one, inshallah. But it is not possible to cover. It is not possible for me to cover all these tenses in this short class. That is why I will divide this class into 2 or 3 lectures. तो आज हम इस लेक्चर में थोड़ा सा जानेंगे प्रेजेंट टेंस के मुतालिक, लेकिन इन चार को अप्लाई, इन चार एस्पेक्ट्स को इन तीनों टेंसेस को अप्लाई करने के बाद, यानी जब हम इनको अप्लाई करेंगे, simple continuous perfect and perfect continuous, when we apply these four tenses to present tense, first we will have four tenses, और tenses इस तरह बनेंगी। प्रेजेंट सिंपल, जब हम सिंपल को करेंगे अप्लाई प्रेजेंट के साथ, तो पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल, और पास्ट सिंपल दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आइए हम जानेंगे ये पॉजिटिव, पहले आइए हम ये जानेंगे पहले कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम किस तरह से टेंसेस में सेंटेंस बना सकते हैं। तो as you, my dear students, as you must be knowing that sentences are of 4 or 5 kinds, and one of them is assertive sentences. We are doing assertive sentences. So first, we are trying to understand how to make tenses, how to make sentences in positive, in assertive sentences first. अब देखो प्रेजेंट सिंपल किस तरह बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
ये किस तरह बनता है, इसका स्ट्रक्चर दरअसल इस तरह है। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम किस तरह बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम किस तरह बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कुछ भी हम लगाते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें हम किस तरह क्या लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लगाते हैं इज, एम, और इन तीनों में से कोई भी इसमें लगाते हैं। इसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह ये जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हैव और हैज। हैव और हैज में वही फर्क है जो गिव और गिव्स में है, टेक और टेक्स में है। हैव इज द प्लूरल वर्ब एंड हैज इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। और उसके बाद लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसके बाद लगाते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द जितना हम सेंटेंस बढ़ाएं या इस मतलब प्रेडिकेट का मजीद जो हिस्सा होगा, इसमें नाउन हो सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो हम लगाते हैं इसके बाद। इसी तरह यह भी रेस्ट मैंने अभी नहीं देखा। अब देखो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगाते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हैव या हैज, दो में से एक। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ हैव आएगा। हैव और हैज के बाद बीन इसका में ऐड करते हैं यहाँ बीन, और उसके बाद लगता है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, इसमें कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है, किस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल में कंटिन्यूअस और परफेक्ट में बनाएंगे सेंटेंसेस। तो अब स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखो, पहली बात आई डू वर्क डेली, आई सब्जेक्ट, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क डेली को हमने ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बनता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने ये आई लगाया और उसके बाद लगाया इज, एम और इन में से एक। और एज यू नो आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। तो आई एम और उसके बाद है इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एम डूइंग, सो वर्क इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने लगाया यही आई हैव डन वर्क, आई के साथ बाद हैव डन वर्क और उसके बाद है आई हैव बीन डूइंग वर्क, आई के बाद है और उसके बाद बीन, उसके बाद डूइंग वर्क। सिंस इसमें हम टाइम भी लगाते हैं कब से ये काम शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज इनफ टुडे, टुमारो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेंसेस इंशाल्लाह रहमान। टिल देन अल्लाह हाफिज, आप अपना ख्याल रखना, स्टे एट होम।